happy that that page was not a fraud. Okay, I completely forgot to talk about the jewelry that ऊपर से when he dances मुझे गर्मी हो रही है. Hi my beautiful sunflowers, welcome back to the channel and welcome to July favorites. I really hope this is going live on 1st August. If it is, happy Friendship Day. Thank you so much for supporting me, being my friend and yeah, just making me a tiny part of your life. And yeah, I'm really happy I've been keeping up with making these favorites wala videos since last 3 months. आज I have a lot more makeup favorites from this month. इसने मुझे comment करके बोला था कि you should include snacks, so I have done it, and a lot of shows and movies. So yeah, without wasting any more time, let's just start with this video. So the first favorite is from Plum. It's their night cream that I've been using regularly. मेरा ये second tub है जो कि almost खत्म होने वाला है. I love how moisturizing it is. I used to use it with vitamin C again from Plum, and this can be your go-to night cream. आप इसको किसी भी फेशियल ऑयल या फिर सीरम के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट विद अ लॉट ऑफ सीरम्स एंड विटामिन सी बिकॉज आई यूज्ड टू ट्राई देम. सीरम यूज्ड टू चेंज, फेशियल ऑयल यूज्ड टू चेंज, बट दिस रिमेन्ड constant and I love it. I'm sharing it in this month because I have bought a new night cream, so I thought एक बार इसको mention करना बनता है. I do see it working on my skin and giving it a glow, so yeah, thumbs up. Also, I totally forgot. Thank you so much for 91k. Like 90k भी 5-4 दिन पहले ही हुए थे and we are already at 91k. So that is huge. Thank you so much. We are getting closer to 100k. So yeah, if you like the vibe so far, hit the red button and join the Sunflower Squad. Also, I am hating my hair. I really think मैं इसी week जाके एक haircut करवा लूँगी because they look. I mean, there is no shape left in my hair. And ऊपर construction work चल रहा है. I don't know कितना disturbance आएगा, but I really want to put this video up. Next we have TAC का lip and cheek tint. I have been using it since months now, and ये अभी भी इतना बचा हुआ है. I'm sharing it again because कुछ स्टोरीज में some people asked about the blush that I'm using. कभी कभी I overdo it so that कैमरा पे थोड़ा ज़्यादा like दिखे. So yeah, कुछ लोग पूछ रहे थे. This is the only blush that I've been using since I think April या May at least, because it looks very natural. It blends easily. अगर मैंने makeup नहीं भी लगाया and if I'm going out, I will still apply this. So moving ahead in makeup favorites, I have the colorful liners that I got from Amazon, which is from this brand called Cups and Lashes, which is owned by Nidhi Katiyar. मैंने सीधे 4 colors मंगवा लिए and I've been loving them. This time I'm using the pink one on my eyes and you can see the pigmentation and everything. The white one I used in my last video. It stayed on for a really long time. मुझे इसको निकालने में हल्की सी दिक्कत हुई, but हाँ, cotton and micellar water से it did get removed and कोई भी इसने कलर भी नहीं छोड़ा था, like stain नहीं छोड़ा था मेरी आंखों. So it's very good, easy to use, and you can get a very good deal on these liners from Amazon. They are selling, I think 500 में 3 liners, and I think individually they cost around 275. So you do the math. So this entire month I've been using this one particular lipstick every single time I'm shooting. So I thought ये बनती है mention करना. So this is from Blur India. They sent me 2 of their lipsticks. Not a sponsored video. They just sent me a PR. But I've been loving using this Call Me Daddy lip color from Blur. It's their matte collection. I'll include the correct names and shade here. And I think I have a coupon code and a link as well. But I have to say it might feel a little drying if you apply it directly. I would say पूरा अच्छे से lip balm लगा के या फिर कोई moisturizing lipstick लगाने के बाद ये लगाना. It's a very beautiful mauve pink. Looks amazing. This is the nude that I always go for. Next one is like a stick, makeup stick. You can use it as a lipstick, blush or even eyeshadow. It blends nicely. This one is a brown shade. आजकल मैं brown ज़्यादा use नहीं करती हूँ. I always go for something colorful on my eyes. So I haven't used it. So I don't know anything about it, but the color is nice. Last one is the brown nail paint that I've been using. I don't know since when. This is from House of Makeup. Honestly, wouldn't recommend it, but ये कलर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मेंशन कर रही हूँ. इसका स्टे पावर इज पैथेटिक. मतलब मैं आज लगाऊंगी, कल सुबह मैं बाल भी धुलूंगी ना, हल्का सा इट विल चिप फ्रॉम माई नेल्स. सो आई वुडंट रेकमेंड इट, बट सिंस बहुत लोग पूछ रहे थे इस नेल पेंट के बारे में, सो आई जस्ट वांट टू मेंशन इट. नेक्स्ट आई हैड टू टॉक अबाउट लव ब्यूटी एंड प्लैनेट. दे रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद मी एंड आई हैव बीन लविंग देयर प्रोडक्ट. Like they gave me a shampoo and a conditioner. It does a wonderful job on my hair, as you can tell. It leaves my hair very healthy and bouncy, and it's very gentle on your hair. In fact, I wanted to talk about 3 brands in particular जो मैंने अभी तक इस साल इनके साथ काम किया है, जिनकी hair care range is
like really good. So you can either go for Biolage, like उनकी जो yellow वाली range है, I really like it. I really like it. उसके अलावा Herbal Essence, amazing. That वो shampoo and conditioner मैंने खुद खरीदा था, and coincidentally they also approached me for a collaboration in that month, but I did not have any dates. मैं दिल्ली जा रही थी तो I said no, but in case you're somebody जिसको अपने shampoo से बोर हो चुका है and needs something very hydrating and like a normal shampoo which does good to your hair, like doesn't make it dry and all, then you can choose from these 3 brands. I will highly recommend these 3. I do not want to choose a favorite. Then we have some snacks. Some नहीं, एक दो ही है. So I have been really liking peanut butter. मैं कभी लाइफ में पीनट बटर उतना नहीं खाया था, बट आई थिंक अप्रैल में आई डोंट नो कब से आई स्टार्टेड लाइकिंग पीनट बटर. सो सबसे पहले तो मैंने वो एक पी से करके कोई ब्रांड है वो खाया था. इट वाज गुड. देन आई स्ट्रेट अवे ऑर्डर्ड दिस 1 kg का अनसॉल्टेड अनस्वीटेंड पीनट बटर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड Desano. इसका टेक्सचर वाज वेरी डिफरेंट. लाइक यूजुअली बटर्स आर लाइक बहुत ही क्रीमी से, ये वाला वाज लाइक लिक्विडी. आई थिंक इसको पता नहीं इसकी क्या डिफेक्ट था, इसकी पैकेजिंग में कोई डिफेक्ट था कि लिक्विड और वो जो क्रीमी वाला बटर वाला पार्ट होता है वो अलग हो गया था थोड़ा. तो मुझे इसको लगाने में थोड़ा डर लगता था, खाने में भी थोड़ा डर लगता था, बट आई रियली लाइक इट. दिस वन इज विदाउट एनी शुगर एंड विदाउट एनी सॉल्ट. आई एम वेरी मच ओके विद नो शुगर पीनट बटर्स, बट आई नीड सम सॉर्ट ऑफ सॉल्ट. तो मैं इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट डाल के फिर खाती थी एंड आई रियली लाइक्ड इट. अभी ये भी खत्म हो चुका है, तो मेरा भाई रैंडमली ऐसे ये माई फिटनेस का पीनट बटर क्रंची उठा के ले आया था एंड आई हेट इट. आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट दिस पीनट बटर, बट इट्स जस्ट नॉट नाइस. आई डोंट लाइक इट अ लॉट, बट अब आ गया तो मैं खा रही हूँ किस तरह. बट आई एम प्रीटी श्योर आई विल ऑर्डर दिस वन अगेन बिकॉज आई रियली लाइक इट. इसके अलावा आई हैव बीन लविंग यूजिंग दिस चिपोटले साउथवेस्ट ड्रेसिंग फ्रॉम वीबा. एक ड्रॉअर का पूरा आपको पिक्चर दिखाऊंगी. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 to 6 of these bottles. like 3-4 खत्म कर दी होंगी हमने और 2-3 हमने खरीद के रखी हैं स्टॉक में. We literally cannot survive without this. Talking about some random shit that I also loved this month. So the first one is the sunset lamp. I made a reel with this as well. इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज घर में बहुत मैसी हो रखा है घर. अभी पीछे वाले रूम में पेंटिंग स्टार्ट हो गई है, सारा सामान बाहर लॉबी में है. So I don't even have a space to shoot. मतलब इस रूम के अलावा इनफैक्ट बैठने की भी जगह नहीं इस रूम के अलावा. So yeah, मैंने ये लैम्प्स Amazon पे 3000 के देखे, 4000 के देखे. I didn't find it anywhere for an affordable price, but फिर मुझे Instagram ad पे मिल गया. I'll include the Instagram page. Basically it comes with these 4 shaded papers and इस लेंस को खोल के इसमें लगाना होता है तो डिफरेंट लाइटिंग्स आती है. It's pretty good. Does a decent job. वो मैंने निकाल दी. Yeah, these are the. एक थोड़ा येलो टोन्ड है, एक थोड़ा ऑरेंज टोन्ड है, एक थोड़ा कलरफुल सा है, लाइक रेनबो ही सा है. But everybody uses the orange one because it is the most famous one. I think if you are a creator, you can use it as a backdrop or just to add a little more element to your videos or pictures. So yeah, it's a good thing. I am happy that page was not a fraud. मुझे तो लग रहा था वो fraud है. I even messaged them कि are you going to ship my like product and they were responding timely. थोड़ा टाइम लग गया था उनको ये रीस्टॉक करने में, so थोड़ा डिले हुआ था but it reached to me, so I'm happy. Next is something I desperately needed, which is a steam iron. This is from Inalsa. ये ब्रांड मैंने Amazon पे बहुत देखा है. Basically what they do is Philips का जो भी बहुत ही हाइप प्रोडक्ट होता है ये उसका सस्ता वर्जन निकाल देते हैं. Got it for like 2000 something. एक बार मैंने इनसे कुछ अब यूज कर लिया तो I think I have more trust on this brand Inalsa. So yeah, I think they also have air fryers and like the bigger version of steam iron जिसमें एक पूरा iron pad भी आता है. iron pad कह रही हूँ, like steam pad क्या कहते हैं उसे, clothing pad भी आता है. I don't know, बड़ा वाला जो होता है ironing steam iron जो शॉप्स में यूज होता है. I am very lazy. Like iron करने में तो और भी lazy. This one has made my life easier. It's also fun to use this. Also एक बार में आप जितना पानी fill करोगे उसमें I think 4 से 5 clothes get ironed एक बार में, and I think that is enough, like more than enough for me. Now let's talk about movies and shows that I've watched and loved this month. इस month I decided कि I have to give myself a break. मैं थोड़ा आराम से chill करके काम करूँगी. I will not always be on YouTube. I've literally stopped watching other creators का content. I don't know. I think ये सारे creators की आदत होती है that you kind of do keep a track of what other people are doing. It's not like a jealousy वाला thing. It's just I don't know. It could be because you want to see what they are creating, you want to see कौन से brands के साथ काम कर रहे हैं, you want to see what are they improving in their content. I don't know. I just used to watch it because YouTube is my workspace and
ऐसे देखने में मज़ा भी आता था, बट इन द रिसेंट टाइम्स आई हैव जस्ट स्टॉप्ड. मुझे बहुत ही बोरिंग लगने लग गया था सेम चीज़ें बार बार देख के. लाइक व्हाट आई एम मेकिंग, एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. तो आई हैव स्टॉप्ड इट. And this month I've seen so many series. I think last month से ही I've been seeing a lot of Netflix. So finally मैं अपने subscription का पैसों को use कर रही हूँ. Yay. So the first show that I have for you guys is Atypical. Oh my god, it is such a wholesome, cutesy सा comfort watch. It's about Sam who is autistic and उसकी पूरी family की story है. They touch so much. They talk about his sister, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटिज्म के बारे में ही है. आई फील इसकी स्टोरी लाइन एंड इसका पिक्चराइजेशन एंड हाउ दे शोन how a autistic person will react to certain emotions in his life is really really cute and yeah, it's just very cute. Just please watch it. But जब ये शो खत्म हो रहा था I was like, मेरा दिल ऐसे टूट रहा था कि I will really miss this family and yeah, it used to be मैं हर रात सोने से पहले यही देखती थी. तो yeah, I really missed it. But so जब मैं इसके लास्ट सीजन पे आ गई थी तभी लोकी खत्म होने वाला था. लाइक लोकी के सारे 6 एपिसोड्स आ गए थे. आई एम समबडी हु कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. मेरा प्लान ये था कि लोकी जब पूरा आ जाएगा, लाइक ऑल 6 एपिसोड वुड बी रिलीज, मैं एक साथ बिंज वॉच करूंगी. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. एटिपिकल के बाद मुझे थोड़ा ऐसे लॉस सा फील हो रहा था, बट Loki ended on the right time and I started watching it. और मैंने एक ही दिन में, एक ही रात में पूरा खत्म कर दिया. And oh my god, if you follow me on Instagram then you know मैं आगे क्या बकवास बोलने वाली हूँ. I've been in love with Tom Hiddleston after this show. Oh my god, मतलब if you are a Marvel fan then obviously you would like the show. They've shown you a different side of Loki and he gets more attention in this show. Obviously he's the main character. It's मैं क्या बोलूँ एक मार्वल शो के बारे में, मतलब इट्स रियली गुड यार, देख लो. बट हाँ, आई फील यू हैव टू नो अबाउट अदर थिंग्स बिफोर वॉचिंग दिस. अगर आपने कोई और मार्वल सीरीज कभी फॉलो नहीं करी है, आई एम नॉट श्योर यू वुड रिलेट टू दिस कैरेक्टर मच. Like this would be a treat for people who are really into Marvel. So I'm so sad कि season इतनी जल्दी खत्म हो गया. The ending that was shown in the season 1 wasn't actually the ending. कुछ और भी चीजें थी, but they had to cut short the shoot and oh my god. कंट्रोल कर रही हूँ कि आई डू नॉट फैन गर्ल ओवर टॉम, बट आई विल. मैं एंड में डाल दूंगी ये. ओके, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू टॉक अबाउट द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग. मतलब इतनी डम हूँ ना मैं. सो आई टॉक्ड अबाउट दिस ब्रांड कॉल्ड आर्जोनाई इन माई मीशो हॉल. उससे पहले भी ज्वेलरी हॉल्स में. सो आई लव दैट ब्रांड बिकॉज दे ब्रिंग आउट रियली ट्रेंडी पीसेस एवरी टाइम. सो दे हैव एन इंस्टाग्राम स्टोर एज वेल. सो आई ऑर्डर्ड 3 set of rings from them. First one is this chunky ring का set. I feel this is a very cool and trendy way to just uplift your look. But I think बहुत pricey थी. Like मुझे 4 rings 400 की पड़ी. I think ये पूरा set आपको मीशो पर 250 का मिल जाएगा. Another set was of this golden antique rings. I really like them. The quality is great, and I really love the black stone वाली ring. I feel it looks very elegant. This was also for 400 rupees. और मैंने एक और ring order करी थी. That was like a chunky ring, but उसमें fuck off लिखा था in a heart shape. So thank God वो अभी तक deliver नहीं हुआ. I really hope वो deliver now ताकि मैं Amazon से उसे order कर दूँ. I think it's available there for a lesser price. So yeah, I really love their jewelry, but I think don't order from Instagram. Go order from Meesho or Amazon. Yeah, if you really like some design, because obviously उनके Instagram page पे better designs है, latest designs है. बहुत costly नहीं है. It's just I've seen it being sold for a lesser price. That's why I'm suggesting it. Talking about movies, I saw 2 movies. एक हसीन दिलरुबा, अमेजिंग मूवी. थोड़ी ओवर थी, बट आई रियली लाइक इट. आई रियली लव तापसी. आई रियली लव विक्रांत मासी. आई एम सो हैप्पी ही इज फाइनली डूइंग सच कमर्शियल मूवीज. मैं 14 फेरा नहीं देख पाई, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत मजा नहीं आया उसके ट्रेलर में, बट दिस वन वॉज किलर, अमेजिंग. यू विल नॉट बी एबल टू गेस की क्लाइमैक्स क्या है. नेक्स्ट वन वॉज मीमी, जिसके ट्रेलर का मैंने बहुत मजाक उड़ाया था. एक्चुअली पूरे इंटरनेट ने मजाक उड़ाया था, बट इट टर्न आउट टू बी अ वेरी डिसेंट वॉच. एक्चुअली इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी हार्ट फॉर्मिंग, एंड पंकज त्रिपाठी इज ग्रेट, एंड कृति सानन हैज एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब. आई थिंक आई एम इम्प्रेस्ड. मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, not that she cares about impressing me, but actually she's done a very good job. So yeah, आप ये दोनों मूवीज भी देख सकते हैं, बट सबसे पहले लोकी देखना. Also, कल रात ही I completed watching Feels Like Ish. I think it's a very good like comfort watch. I think 6 episodes ही हैं. It's about short stories that are थोड़ा romantic and lovey-dovey. I really like the Quarantine Crush and Interview, and also Sabaz. I don't remember the name of it. I also liked actually this Rohit wala
short story, and also Radhika Madan wali story. I think it was funny. I think last story को छोड़ के मुझे सारी पसंद आई थी. So yeah, you can watch that as well. Also talking about the sunflower shout out of the video, it goes to Megha, who very sweetly confessed that she has a crush on Harshit, and she was like, please, although she has a boyfriend, and he's handsome too, but still wanted to confess. So it was very cute. मुझे बहुत cute लगा. I told it to Harshit as well, and he said, thank you, Megha. So yeah, if you want a shout out, don't crush on my boyfriend, but मैं अलग कमेंट्स को भी चूज करती हूँ. इट्स जस्ट ये मुझे बहुत फनी लगा, बहुत क्यूट लगा. सो जब मैंने पहले लोकी कंप्लीट कर लिया था, आई वाज सो मच इन लव विद दैट मैन, बट इन हिज ब्लैक हेयर, लाइक लोकी वाली विग में. फिर एक दिन एक रील दिखी वेयर ही वाज डांसिंग इन अ सूट, एंड ओ माय गॉड, ही वाज किलिंग इट, लाइक किलिंग इट. फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देन आई वॉच्ड all of his interviews. Last week मुझे जो vlog डालना था, it got delayed by 2 days because I was busy stalking Tom Hiddleston, like every interview he's ever done, every controversy he's ever been in. मुझे सब कुछ पता है इस आदमी के बारे में. I know everything. I've been obsessed with him. I mean, he's so pretty. I love how he laughs. Sometimes he laughs with his mouth open and eyes shut. It's so cute. And he has baby blue eyes. Baby blues. I mean, I don't know why, but बहुत time बाद I've had such an intense crush on somebody. Last March से I've really not seen any thriller या फिर drama type series, but for this man, because I wanted to watch him more, मैं सारे interviews खत्म कर चुकी थी. I was done with Loki, I was done with Marvel as well. वो तो पहले भी देख चुकी थी. I wanted something new to watch. So I started watching his series called The Night Manager, which is like a drama mystery thing, and he looks so hot. I think the stylist did a very good job. He made him wear a lot of blue, which actually suits him so well, and he looks so hot. मतलब ऊपर से when he dances, मुझे गर्मी हो रही है. Also, I love his voice. I mean, it's so sexy. There is this interview where he's literally just saying maths and physics के formulas. The Pythagorean equation is a squared plus b squared equals c squared. I was like, how perfect is this man? And I just really like how he talks, how adorable and cute he looks when he's embarrassed. About it. Okay, Tom Hiddleston's bomb deserves its own Twitter profile. Hashtag Hiddlesbum. Hashtag Hiddlesbum. My parents will be so proud. Yes. He actually has a very cute bum. मुझे लग रहा है मैं आधे घंटे की वीडियो सिर्फ इसी बारे में बना सकती हूँ. एक तो I am obsessed with his smile. He makes such a cute सा face when he smiles, or when he's embarrassed, or when he's, I don't know, he's very cute. I feel like, and he's 40. I cannot imagine somebody who's 40 and is still so cute. I think that's why I like him. Also, he's very sophisticated, very elegant. He's also very sensitive. एक तो he loves to dance. If you can ask him to dance anywhere and he will do it. And the snake hips, I think he called the step that I'll show here as snake hips. It's so cute. Also, when he dances in a suit, it's so hot. बस एक दिल में एक soft corner है for him. It's reserved for him. Like, it's been like 15-16 days and I'm still very obsessed with him, so I can tell you this is a long-term crush. Also, he is so funny and so crazy at the same time. I'm a cowboy! I'm a cowboy! I just wanted it to be a good party! Loki! I am the bad guy. I can't believe you fell for that. You're such an idiot. I just love him.